Good morning, everyone. Welcome back to our class. So yesterday we have finished part 4A, that is fundamental duties of our Indian Constitution. And it covered Article 51A. Today we are starting with the very next part, that is part 5, which deals with union. So in part 5, we will study all the branches that comes under the union. And it covers Article 52 to 151. Fundamental duties ended with 51A. DPSP ended with Article 51. Started from 36 to 51. And 51A was fundamental duties. Now 52 to 151 is union. That is part 5. So part 5 deals with the union, covering Article 52 to 151. So now, what comprises of this part 5? Let's see. So part 5 comprises of, first of all, the executive branch, then legislative branch, then judiciary, and last is the CAT. So we will read about all these in our part 5, Article 52 to 151. Okay, so now, over here we have executive, that deals with Article 52 to 78. Here we will read about president. We will read about vice president, council of minister. All these we will cover with Article 52 to 78. Next come legislature. In legislature we will read about Lok Sabha, Rajya Sabha. Then judiciary, Supreme Court, CAG. Then CAG, we will read about CAG is Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General. Okay. CAG audits the accounts. Comptroller and Auditor General. CAG covers Article 148 to 151. So in the same order, we will read about, we will discuss all these topics in our class. So for today's class, we will deal with the very first part, that is A, that is executive, with the very first topic of executive, that is president. तो आज हम president करेंगे executive के अंदर. Now let's see. First of all, president. What is president? Or who is president? What does this term mean? See, president is the head of state. Indian polity के according जो president है वो head of state है. He is the first most person. First person है हमारी country का. First person of India. Okay. And similarly, he is a symbol of what? He is a symbol of solidarity, unity and integrity of the nation. Parliament, when we say what parliament comprises of, जब हम बोलते हैं ना parliament की composition बताओ, parliament comprises of 3 things. First is president, next is Lok Sabha and the next is Rajya Sabha. So president क्या है? बहुत important, very first citizen है हमारी country का. He is considered as the first citizen. He / she. And is a symbol of solidarity, unity and integrity of nation. Current president कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू. Recent president कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू. Now, he is a part of union executive along with the vice president, prime minister, council of minister and attorney general of India. Union executive का part होता है किसके साथ में? उसको वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. All this comprises of our union executive. So our president is part of the union executive. और union executive में और कौन-कौन से members होते हैं? One is vice president, second one is president, prime minister, third one is council of minister, and fourth is attorney general of India. This is what we have about who is the president. Okay.
So now next thing we have over here, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का. सी हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. पहले तो हमारी कंट्री में कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का. कभी देखा हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं. देयर इज ऑलवेज इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इंडियन प्रेसिडेंट का. कैसे? हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. वी विल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लोकसभा, राज्यसभा, and we will elect in state legislative assemblies, and then they will participate. वो participate करते हैं president के election में. They will participate in president's election. So this is the very first thing that you have to keep in mind. Now, very first statement says there is no direct election for Indian president. Now, an electoral college elects him. अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है जो उनको इलेक्ट करता है. इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है. इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? वेरी फर्स्ट थिंग इज लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स. लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स. नाउ ऑल दीज मेंबर्स, either the member of Lok Sabha and Rajya Sabha and Lok Sabha, whether it is a member of state legislative assembly या फिर legislative assembly of union territory of Delhi and Puducherry, all of the members must be elected. अब दो तरह के members होते हैं ना, one is elected and other one is nominated. Okay. Only elected members can participate in what? Only elected members can participate in the election of president. No nominated member can participate. Next thing, only member of state legislative assembly can participate, that too elected. Only elected members of state legislative assembly can participate. Legislative councils have no role. Next, only legislative assembly, सिर्फ दो union territories की legislative assembly है जिनके members participate करते हैं. The very first one is Delhi and the second one is Puducherry. Only Delhi and Puducherry's elected legislative assembly members will participate. This is what you have to keep in mind. Now, what kind of question you can expect from this type of topic? Very first thing is, just let me erase it all. Give me a moment. Yeah. So what kind of question you can expect is, who participates in the election? Very first type of question जो यहाँ से हमारा बनेगा. कौन participate करता है president के election में? Okay. This is the most common question जो अभी तक पूछा गया है. तो elected members participate करते हैं लोकसभा, राज्यसभा के, state legislative assembly के, legislative assembly of Delhi and Puducherry. This is what you have to keep in mind. They can give you an option, either two or all, or they will only give you one. Okay, so that's how you have to eliminate it. Now next, अब यहाँ पे है who doesn't take part in the elections. कौन participate नहीं करता है presidential elections? First is nominated members of Rajya Sabha. Okay, we know that president nominates 12 members who have distinguished knowledge in particular arts or music or any kind of literary subject. So who do not participate? First is nominated members of Rajya Sabha. They do not participate. Nominated members of state legislative assembly. They do not participate. Members of legislative council, either elected or nominated, they do not participate. And nominated members of union territory of Delhi and Puducherry. Delhi और Puducherry के जो nominated members हैं वो भी participate नहीं करते.
So what you have to keep in mind, all nominated members, they do not participate in elections. Okay. But when it comes to state legislative council, वहां पे elected और nominated दोनों participate नहीं करता है. Okay, this is what we have for who doesn't take part in elections. Next comes term of office. Term of president's office. A president का जो office है, he holds the office for a year of, for 5-year period he holds the office. ठीक है? So president's office, president is elected, he holds the office for 5 years. He sits in the office after completion of 5 years, given no election has taken place or no new president has been elected till then. So in this term of office, now we read 3 articles. इसके अंदर हम 3 articles पढ़ेंगे. You can make the same chart rather than writing this. Very first is Article 57, Article 61, and Article 56. Article 56 states, President shall hold the office for the term of 5 years. President shall hold the office for a term of 5 years. This is what Article 56 states. If he may resign early, then resignation he must give to Vice President. Now, Article 57 states what? Article 57 states that eligible for re-election. Eligible for re-election. For any number of time. And Article 61 states that may remove from his or her office before 5 years by impeachment. So let's discuss these. It is impeachment. So Article 56 states that the president shall hold office for a term of 5 years. अगर president है, he should hold he must hold the office for a term of 5 years. कितने time mention है इसके अंदर, कितने term के लिए office hold कर सकता है? 5 years के लिए. और अगर president को जल्दी resign करना है, then that resignation must be given to the vice president. Now, next, Article 57 states, a person is eligible for re-election if there is any kind of president, he is eligible for re-election for any number of times. We can re-elect him for any number of times. This is what this states. Now, term of office as per Article 61 में देखते हैं. Article 61 में बोल रहा है कि अगर एक president को उसके 5 years complete होने से पहले अगर उसको remove करना है, then that removal will only take place through the process of impeachment. So impeachment is the only process through which we can remove the president before the term of 5 years. These are the 3 articles that we study in the term of president's office. इसके अंदर ये 3 important articles हैं. One is 56. I'm writing over here Article 56 that talks about that president shall hold the office for a term of 5 years. Article 57, eligible for re-election for any number of times, and Article 61, which states that if president we have to remove the president before 5-year completion, then it can only be done through the process of impeachment. Okay, this is what we have for article. This is what we have for our terms of office. Okay, term of president's office. Now, let's move forward to the qualification of president. When it comes to qualification, see, अगर आपको कोई भी office hold करना है, if you are preparing for any kind of exam or anything, you should be eligible. Okay, आपके पास कुछ particular qualifications होने चाहिए, आप graduate होने चाहिए, you must hold or a degree equivalent to that. Now, qualifications of president में देखते हैं. Qualifications of president में बोलते हैं that he should be an Indian citizen. Next,
his age should be minimum 35 years. Minimum 35 years का होना चाहिए, Indian citizen होना चाहिए. He should qualify the conditions to be elected as a member of Lok Sabha. Qualify होना चाहिए कि if there is election for Lok Sabha, then he must be qualified to be a member of Lok Sabha. Next. Should not hold any office of profit under the central government, state government, or any public authority. Okay, we will discuss what is office of profit, but very first thing that we have to see in qualification of president is Article 58. I have told you कि I will discuss the article जिस भी topic से related होगा उस topic के साथ में, so that you can keep this in mind. So qualification of president, we deal it under Article 58. आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन है. ये सारे पॉइंट्स जो 4 पॉइंट्स हैं ये आर्टिकल 58 के अंदर गिवन. सो यू कैन राइट ओवर हियर आर्टिकल 58. ओके, सो आर्टिकल 58 स्टेट्स कि if you want to be the president of India, you must be eligible. What are the qualifications? ठीक है, for that eligibility criteria क्या है? Very first is that he should be an Indian citizen. Okay, if you are a citizen of any other country, then you are not allowed to be the president of India. Minimum age attainment is 35 years. You must have attained 35 years of age. Next, you must be qualified enough to be elected as a member of Lok Sabha. Lok Sabha का member बनने के लिए qualification होना चाहिए आपके पास. अगर नहीं है, then again you cannot go for presidential elections. Next, should not hold any office of profit under the central government, state government, or any public authority. You must not hold any office of profit. कोई office of profit नहीं होना चाहिए under the central government, state government या फिर public authority. Now what this term office of profit means? See, office of profit का मतलब है, there is this very simple definition for office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एनी ऑफिस जो आप किसी भी यूनियन स्टेट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आपने अटेन किया हुआ है और यू आर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पर्सन होल्डिंग एनी सच ऑफिस इज रिसीविंग अ सैलरी और अलाउंस और एनी अदर पेक्यूनरी बेनिफिट जो कि हमारे या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इधर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज. So office of profit is what? Office of profit is any office, कोई भी ऑफिस जो या तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर है एंड यू आर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑन दैट बिहाफ. ठीक है, यू आर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस और उसमें से आपको जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं, ऑल द पेक्यूनरी बेनिफिट्स एंड द सैलरी इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट? From consolidated fund of India or consolidated fund of state. That is office of profit. Now, office of profit क्या है? ये ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का कि अगर आपने पहले से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, if you hold any kind of office under central government, state government या फिर कोई भी local self government and the salary and the benefits that you are getting या allowances you are getting, वो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर जा रहा है, then that will be classified as office of profit. So we consider it as a ground of disqualification. ये ग्राउंड है एक डिस्क्वालिफिकेशन का कि अगर आप होल्ड करते हो then you are not allowed to be what? You can not qualified enough to be the president of India. Next. See, office of profit, many a times the question comes whether the term office of profit is mentioned in Indian constitution or not. हर जगह पे आपको मिलेगा ये should not hold any office of profit, बहुत सारी जगह पे mentioned है. So this office of profit term, it is a very vague term, बहुत vague term है and it is not mentioned. It is not mentioned in Constitution of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है. सॉरी, नॉट मेंशन, इट इज नॉट डिफाइंड. इट इज नॉट डिफाइंड. मेंशन तो है, डिफाइन नहीं. ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये पर्टिकुलर चीज है, तो हम इसको कैसे कंसिडर करके चलते हैं?
I have told you what is ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कोई भी ऑफिस जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर होल्ड कर रहे हो, एंड यू आर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस, and the salary, benefits and everything is upon consolidated fund of state or consolidated fund of India. तो CFS या फिर CFI के ऊपर all the expenditure is charged, then that office will be counted in office of profit. Now, fourth statement states that he should not hold any office of profit under the central government, state government or any public authority. ठीक है, आप कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर. दिस इज व्हाट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट्स. नाउ, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, many a times what happened, many a times there is a person, for example, if we say there are certain bodies जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट. देयर आर सर्टेन ऑफिसेस जो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डिस्क्वालिफिकेशन से प्रिवेंटेड है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आई हैव टोल्ड यू, इट इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. So there are certain offices, there are certain positions जो prevented है इस office of profit के disqualification से. So let's see what are those. First is cabinet ministers, opposition leaders, chairmen of NCSC and NCST. These are the certain offices जो हमने prevent किया है, which are excluded from this office of profit. ठीक है, they are excluded from this office of profit disqualification. Why? Because see, many a times what happened now, there is one person who holds two offices, who is handling two departments. For example, our cabinet ministers. ठीक है, they're part of cabinet, they are holding certain portfolios. So that is why what happened, that is why we exclude them from office of profit. ठीक है, office of profit के through there was this act, that is Prevention of Disqualification Act. Prevention of Disqualification Act. By this act, or we say it the Office of Profit Act, OOP Act. By this act, what there is the prevention of people from disqualification if they are holding any office of profit. Okay, so this is, you have to keep in mind. Now, I hope office of profit is clear. Next are, what are the conditions of president's office? Okay, if you are holding the presidential office, then there are certain conditions. What are those? Very first, it states he cannot be a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. आप qualify, तो आपके पास में qualification में it is given that you must be eligible to be a member of Lok Sabha. Next it states, but if you are holding the president's office, then he cannot be member of Lok Sabha or Rajya Sabha. दोनों में से किसी का member नहीं हो सकता. If he has been a member of either house, he should vacate the day on his very first day as president in office. अगर वो किसी भी ऐसे house का member है, ठीक है, either Lok Sabha or Rajya Sabha, then from the very first day when he entered into the president office, he must vacate the seat at Lok Sabha or Rajya Sabha. Lok Sabha और Rajya Sabha की सीट आपको छोड़नी पड़ेगी, then only you can be the president. Next, he should not hold any office of profit. कोई office of profit आप hold नहीं करना चाहिए किसी भी state, central या फिर local self government के अंदर. कोई भी आपके पास ड्यूटी या फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए नहीं होना चाहिए. Next, third it states, for his residence, Rashtrapati Bhavan is provided to him without the payment of rent. रहने के लिए आपके पास में राष्ट्रपति भवन है, which is provided to the president, and he do not pay any kind of rent for living there.
Parliament decides his emoluments, allowances and privileges. Parliament decide करता है कि क्या आपको emoluments मिलेंगे, क्या आपके allowances होंगे, क्या क्या privileges होंगे आपके पास. Parliament cannot diminish his emoluments and allowances during his term of office. For the term, for example, if you are president for 5 years, ठीक है, आप अभी elect हुए 2022 में, 27 तक आप रहोगे. Then Parliament cannot diminish the emoluments. आपके जो emoluments, जो आपके allowances हैं, Parliament उसको diminish नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता. He is given immunity from any criminal proceedings. कोई भी criminal proceeding है उसके against president के पास immunity होती है, even in his personal acts. Next it states, arrest or imprisonment of the president cannot take place. अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट का इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वी विल से इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर स्कैम या कुछ स्कैंडल है, देन व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट एंड देन यू कैन इनिशिएट ऑल दोस प्रोसीडिंग्स. Only civil proceedings can be initiated for his personal acts and that too after giving 2 months notice. सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट. वो भी यू हैव टू गिव 2 months prior notice that we are going to initiate a civil proceeding against you, then only you can initiate it. Now next come the very important topic, that is impeachment of president. Okay, so now let's see impeachment of president के अंदर है, हमने आर्टिकल 61 में पढ़ा था impeachment of president अभी जब हम टर्म ऑफ ऑफिस डिस्कस कर रहे थे. सो आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट. कैन राइट ओवर हियर आर्टिकल 61. ओके, सो व्हाट डू वी हैव इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को सिर्फ आप एक ही पर्टिकुलर ग्राउंड पे इम्पीच कर सकते हो, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, then only president can be impeached. Otherwise he cannot be. But this term violation of constitution, it is again nowhere defined in the constitution. It is again a vague term. Violation of constitution कहीं पे भी define नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. It is a vague term. ठीक है. Now let's see कैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है. ओके, सी प्रेसिडेंट दो तरह से अपना ऑफिस छोड़ सकता है. पहला तो उसको इम्पीच करके आप हटा दो. दूसरा इफ ही रिजाइंस. इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस देन व्हाट हैपेंस, he gives the resignation to vice president. Okay, after giving the resignation to vice president he leaves the office. This is the next thing. president का resignation किसके पास सबमिट होता है, vice president के पास. अब impeachment में कुछ प्रोसेस है जो होता है, as you can see on the next slide. First of all, we will look into it, that this impeachment, it is a quasi judicial process. There are certain things you have to keep in mind. It is a quasi judicial process and the power for impeachment is vested in Union Parliament. It is not Uttar Pradesh, it is Union Parliament. Only Union Parliament has a power to impeach the president. No one else has the power for impeachment of the president. And what are the grounds? Grounds is violation of the constitution. Okay. State legislature don't have the power. Only Union Parliament have the power for impeachment and it is a quasi-judicial process. This is what you have to keep in mind. अब देखो ये process discuss करते हैं. Just give me a minute. Yeah. So, what is the process for impeachment? See, before impeachment now, what there should be? There should be 14 days notice. एक 14 days का notice is served to the president.
14 days notice gets served, and the process what? The motion is introduced in either house of the parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. ठीक है? Motion get introduced in either house of the parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, and a 14-day notice is served to the president so that he can express his opinion about the violation of constitution. ठीक है? That is why 14-day notice is served and a motion is moved in either house of the parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha. Now, what happened after this? अभी 14 days का notice जब serve किया जाता है president को, then president can like he can either resign the charges or he can accept the charges. Very first thing, ठीक है? He can either accept the charges or he can just decline कि हाँ, I don't accept all these charges. Now, after serving of this 14-day notice, either president resigns. President या तो अपनी सीट को खाली करेंगे. President will resign from the office. Next, he will refuse. He will refuse the charges. अब ये जो प्रोसेस है ना हमारा, जहाँ पे हमने बोला था कि एक मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे, मोशन इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, जब प्रेसिडेंट विल रिफ्यूज अबाउट द चार्जेस, when president will refuse the charges, he will not resign from his office, then a motion is introduced in either house of the parliament, either in Rajya Sabha or in Lok Sabha. ठीक है? After this what happens? After this what happens? Lok Sabha initiate impeachment charge. Initiate करता है impeachment charge, और ये जो impeachment charge है, it is signed by 1/4 of the members of Lok Sabha. By 1/4 members of the Lok Sabha. Now, what happened? 14-day notice is given. President will refuse or he will resign. If he refuses, then this impeachment initiates. And what happened? After this, with minimum support of 1/4 members of the house and the originating house. Originating house कौन सा हाउस बनता है? जहां पे वो मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, उस हाउस को हम ओरिजिनेटिंग हाउस नाम करेंगे. We will name as that originating house. ठीक है? This originating house will draft all the charges. For example, here the originating house is Lok Sabha. इस चार्ट के अकॉर्डिंग what happened? Originating house यहाँ पे लोक सभा है, तो लोक सभा क्या करेगा? लोक सभा इम्पीचमेंट चार्जेस को पास करेगा विद 2/3 मेजोरिटी और फिर उसको राज्यसभा में सेंड करेगा. Now, after signing the charges, passes them to Rajya Sabha for investigation. Originating house क्या करेगा? 2/3 मेजोरिटी से, majority of not less than 2/3 of the total strength से पास करेगा उन चार्जेस को, और फिर सेम मोशन को, सेम इम्पीचमेंट चार्जेस को राज्यसभा में भेजेगा. अब ये राज्यसभा में चार्जेस जाएंगे. Here president have a chance. President have an opportunity. And what he can do? He can defend himself through a legal practitioner. Yeah, through a legal practitioner, he can defend himself. Now, अब राज्यसभा में जाएगा. राज्यसभा will also investigate the charge. President has a right to sit in all the proceedings. राज्यसभा इन्वेस्टिगेट चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो सारी सीटिंग से बैठे. नाउ, राज्यसभा either agrees the charges and passes it with 2/3 majority and president stands removed. अगर राज्यसभा, see यहाँ पे भी दो चीजें होती है. when राज्यसभा के पास the for charges it goes, जितना भी impeachment investigation है, when it goes to राज्यसभा, what will happen over here? Either Rajya Sabha will agree and get convinced कि हाँ, on this ground there is violation of constitution and the president will stand impeached. And अगर president अपने आप को successfully defend कर पाए, ठीक है, अगर president अपने आप को successfully defend कर पाए, then what will happen?
If president successfully can defend himself, then impeachment process will stop over here. Just give me a minute to write. Yeah. अगर प्रेसिडेंट अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए, then there is no impeachment. And if Rajya Sabha got convinced that violation of constitution didn't take place, that's why there will be no impeachment. President ke defend council se Rajya Sabha got convinced, and that's why there will be no impeachment. But if Rajya Sabha agrees with all the charges jo Lok Sabha ne initiate kiye hain, then what will happen? Rajya Sabha will also pass all the charges with 2/3 of majority. 2/3 majority से अपनी total strength की 2/3 majority से Rajya Sabha will also pass the charges, and then president will be impeached. President will be impeached. So this is the whole process of impeachment. I'll repeat it in a quick manner. So what happened? Impeachment कैसे होता है? Impeachment का सिर्फ एक ground है, violation of constitution. उसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते. व्हाट इज इम्पीचमेंट? प्रेसिडेंट के टर्म को खत्म होने से पहले उनका रिमूवल, दैट इज इम्पीचमेंट. आर्टिकल 61 डील करता है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से. नाउ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए क्या होता है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए 14 डेज का नोटिस सर्व किया जाता है प्रेसिडेंट को, इफ पार्लियामेंट फील्स लाइक कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है. देन प्रेसिडेंट ईदर ही कैन रिजाइन. नेक्स्ट, अगर उन्होंने वैसी कोई पर्टिकुलर चीज की है, then he will resign or he will refuse to accept the charges. If he will refuse to accept the charges, then a motion will be introduced in either house. Either it can be Lok Sabha or it can be Rajya Sabha. जिस हाउस में ओरिजिनेट होगा उस हाउस को हम ओरिजिनेटिंग हाउस बोलेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लोकसभा का केस लिया है. लोकसभा ने इनिशिएट किए इम्पीचमेंट चार्जेस, और ये जो इम्पीचमेंट था ये साइन हुआ बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ Lok Sabha. Now, what happened after this? Lok Sabha ने impeachment charges को pass किया by 2/3 of the total majority of that house. 2/3 of the total majority से pass किया, 2/3 majority से, और राज्य सभा में send किया ये charges है और हम president को impeachment के लिए इस basis पे इनको हटा रहे हैं, violation of constitution पे हटा रहे हैं. When it goes to the Rajya Sabha, that is the second house, वहां पे जब जाता है, where their president have a chance, president can defend himself. प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. व्हेन अगर प्रेसिडेंट राज्यसभा को कन्विंस कर पाए दैट दीज चार्जेस आर नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट चार्जेस है, आई हैव नॉट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर विल बी नो इम्पीचमेंट. बट इफ राज्यसभा गॉट एग्रीड कि हाँ ये चार्जेस थे, एंड राज्यसभा ने इन्वेस्टिगेट किया सारे चार्जेस को और वहां बोला कि ये जो चार्जेस हैं जो लोकसभा ने इनिशिएट किए हैं, राज्यसभा एग्रीज विद इट, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड. ओके, प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ होल इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Now comes the power and the functions of Indian president. Powers और functions क्या क्या है Indian president के पास? See, I'll classify into this powers और functions में. You can make this kind of chart. एक A4 size sheet लेके आप उस पे बना लो powers and functions. Executive, legislative, diplomatic, military, judicial. All the powers and functions on one chart will be covered. So executive functions, executive powers में देखते हैं. For every executive action the Indian government takes is to be taken in his name. कोई भी executive action है जो Indian government कर रही है, ठीक है, या फिर जो भी executive action Indian government ले रही है, it will always be done in the name of president. हमेशा president के नाम से किया जाएगा. He may or may not make rules to simplify the transaction of the business of central government. He can make rules for simplifying the transaction of the business of the central government. He appoints the Attorney General of India and determines his remuneration. Attorney General को appoint करता है, उनके remuneration को determine करता है. He appoints the following people: Comptroller and Auditor General,
Chief Election Commission, chairman and members of UPSC, स्टेट गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन एंड मेंबर्स. इन सबको कौन अपॉइंट करता है? इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ कि ये पर्टिकुलर बॉडी है, इसका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है. यू हैव टू कीप दिस अपॉइंटमेंट एंड ओथ. किसकी ओथ, किस पर्टिकुलर पर्सन को कौन ओथ दिलाता है, ठीक है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ he seeks administrative information of the union government. Next point, he requires prime minister to submit for the consideration of council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been discussed considered by the council. If there is any matter जिस पे जो decision था किसी एक minister ने ले लिया but वो council पूरे council of ministers में discussion उसका नहीं हुआ है, सबने consider नहीं गया है, then he can request the prime minister कि you go to the council of minister and discuss with them and उनका जितना भी व्यू पॉइंट है वो आप उस पर्टिकुलर डिसीजन पे पूछो. He appoints national commission of scheduled caste, scheduled tribe and other backward class. इन सबके जो चेयरमैन होते हैं उनको भी वही अपॉइंट करता है. He appoints interstate council. He appoints administrator of union territories. He can declare any area as scheduled area and has a power with respect to administration of scheduled area and tribal area. किसी भी एरिया को scheduled area डिस्कस कर सकते हैं and president has the power with respect to administration of scheduled area and tribal area. किसी भी scheduled area और tribal area की powers के administration के respect में जो powers है वो भी president में vested है. Next come legislative powers. Legislative powers में क्या है? He summons or prorogues parliament and dissolve the Lok Sabha. वो समन करता है, either he can prorogue the parliament या फिर लोकसभा को dissolve भी कर सकता है. Next, he summons a joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha in case of a deadlock. अगर कोई भी original bill है जिसपे deadlock है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, then he can call for a joint sitting. He addresses the Indian Parliament at the commencement of the first session after every general election. Whenever there is an election, whenever the government gets changed, then what happened? He addresses the Parliament at the commencement of the first session. He appoints Speaker, Deputy Speaker of Lok Sabha and the Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha when the seats fall vacant. When all the seats fall vacant, then he can appoint Speaker, Deputy Speaker, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha. He nominates 12 members of Rajya Sabha. जो 12 members हैं राज्य सभा में उनको ये nominate करते हैं. He nominate members, 2 members of Lok Sabha from Anglo-Indian community से 2 members को nominate करते हैं किसमें? लोक सभा में. He consults Election Commission of India on questions of disqualification of MP. He can consult Election Commission of India अगर किसी भी MP की disqualification के regarding कोई भी question होता है. He recommends / permits the introduction of certain types of bill. He can also recommend and permit introduction of certain types of bills. He promulgates ordinances. He lays the following report below the Parliament. CAG, UPSC and Finance Commission. इन तीनों bodies की या फिर कोई भी अगर government body होती है जिसकी particular कोई report आती है, then president lays that report before the Parliament. Before the Parliament. Okay. Now, he promulgate ordinances whenever the houses are not in session, then president can promulgate ordinances. Now, financial powers में क्या क्या है president की? Introduce the money bill. His prior recommendation is must. If you are introducing money bill in Lok Sabha, then money bill can only be introduced in Lok Sabha. Very first thing. Then prior recommendation of president is must. He causes the union budget to be laid before the Parliament. If there is union budget, he causes that union budget to be laid before the Parliament. To make a demand for grants, his recommendation is prerequisite. If you want to make demand for grants, then the recommendation of president is prerequisite. Contingency fund of India is under his control. We say that contingency fund of India is also known as the emergency fund. Okay. So contingency fund of India वो president के control में रहता है.
He constitute the finance commission every 5 years. हर 5 साल पे what he constitute? Finance commission. Next come the judicial powers of the president. अब judicial power में क्या है? He appoint chief justice and Supreme Court and High Court judges. Supreme Court के judges या फिर High Court के judges का appointment करते हैं. He takes advice from Supreme Court. However, the advice is not binding of. If he requires advice, then Supreme Court will give the advice, and that particular advice of Supreme Court is not binding on the president. He has pardoning power under Article 72. Under Article 72, he has pardoning power. He has been conferred with the power to grant pardon against punishment of an offense against union law, punishment by a martial court or death sentence. If any person have got a death sentence, ठीक है, या फिर उसके पास उसको मार्शल लॉ के अंडर कोई पनिशमेंट मिला है, ठीक है, मिलिट्री लॉ के अंडर कोई पनिशमेंट मिला है, या फिर कोई ऑफेंस है जो यूनियन लॉ के अंडर जिसका पनिशमेंट उसे मिला है, then president have pardoning power. President can totally annul that particular judgment and president will pardon that particular person. Now, pardoning power में ना हमारे पास 5 चीजें आती हैं. Very first is pardon, second is commutation, third is remission, fourth is respite, and fifth is reprieve. We will discuss this what all these 5 means. Okay, just give me a minute. Okay, so see over here, यहाँ पे हम pardoning power discuss कर रहे हैं. So very first we have is pardon. सी पार्डन का मतलब होता है हिंदी में माफ कर देना, ठीक है. तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ही कैन कंप्लीटली एब्सॉल्व. कोई भी अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है या फिर इफ दैट पर्सन इज guilty of any kind of offense, then president can pardon him. Pardon means he will completely absolve all the charges and it will leave the person what free of charges, and he can walk out of that particular thing. Now ये जो पावर्स है ना, पार्डनिंग पावर्स, ये सारी पावर्स है हमारी आर्टिकल 72 के अंडर. यू हैव टू कीप दिस आर्टिकल इन माइंड. नाउ नेक्स्ट थिंग, पार्डन का मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्विंग, पूरी तरह से खत्म कर देना उसको, ठीक है. कंप्लीटली एब्सॉल्विंग द गिल्टी ऑफ ऑफेंडर. नाउ पार्डन का मतलब है उसको माफ कर देना, जो भी उसने क्राइम किया उसको कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना. नेक्स्ट वी हैव कम्यूट. ओके, हियर कम्यूटेशन इज रिटन, इट्स द सेम थिंग, कम्यूट. इसके अंदर क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट to other form of punishment. He will substitute the punishment from one form to another. Now, हमारे पास next है remission और remit. यहाँ पे क्या करते हैं? He will reduce the time. अगर किसी पर्सन को 10 साल की सजा मिली है, ठीक है, उसको वो 5 years की कर देंगे विदाउट चेंजिंग द नेचर, बिना उस सेंटेंस की नेचर को चेंज किए हुए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए तुमको इस पर्टिकुलर जेल में रहना है और वहां पे जाके तुम्हें खाली पत्थर तोड़ने, ठीक है, तो उस पनिशमेंट की नेचर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वो पत्थर तोड़ने का काम 10 से 5 साल का कर देंगे, सिर्फ टाइम को रिड्यूस करते हैं रिमिशन में. नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर रेस्पाइट. रेस्पाइट का मतलब है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन. Stay on execution, it means what he will do, he will put a stay on the execution and he will take it for either for commutation, या तो उस पर्टिकुलर पर्सन को कम्यूटेशन मिल जाएगा या फिर पार्डन, ठीक है. he will put a stay on the execution and what he will do, he will put a stay on the execution and next thing he will do is, sorry, this is reprieve not respite.
दिस इज रिप्राइव. रिप्राइव के अंदर क्या करेंगे, ही विल पुट अ स्टे ऑन एग्जीक्यूशन एंड देन द पर्सन विल बी टेकन ईदर फॉर कम्यूटेशन और फॉर पार्डन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स इज रेस्पाइट. रेस्पाइट के अंदर क्या होगा, रेस्पाइट के अंदर ना कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, उसका जो पनिशमेंट है ना उसको रिड्यूस कर देंगे या फिर उसकी नेचर को चेंज कर देंगे. हियर रिड्यूसिंग द सेंटेंस और चेंजिंग द नेचर ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस. ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस. This you have to keep in mind. Okay. So जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उसमें फॉलोइंग टाइप्स इंक्लूड होते हैं. पहला है हमारा पार्डन, जिसमें वो कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देते हैं और उसे माफ कर देते हैं, पार्डन प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रांट कर देते हैं. नेक्स्ट कम कम्यूटेशन. कम्यूटेशन में है पनिशमेंट का नेचर बदल देंगे. ठीक है, पनिशमेंट का नेचर ऐसे बदल देंगे, इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बस नेचर बदलेगा. नेचर कैसे बदलेगा कि वही सेम एग्जांपल था कि इस पर्टिकुलर जेल में तुम्हें पत्थर तोड़ने हैं तो पत्थर तोड़ने की जगह टॉयलेट साफ कर दो. दैट इज व्हाट कम्यूटेशन इज. उसका नेचर बदल देगा. नेक्स्ट कम्स रेमिशन. रेमिशन में क्या है, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, टाइम पीरियड है, वो कम कर देंगे बिना नेचर चेंज किए. नेचर तो वही रहेगा, 5 साल पत्थर तोड़ने, पहले 10 साल थे 5 साल कर दिए, सिर्फ टाइम पीरियड कम कर देते हैं. व्हेन इट कम्स टू रिस्पाइट, रिस्पाइट में होता है अगर कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए. फॉर एग्जांपल एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, तो इधर या तो उसका सेंटेंस कम कर देंगे या फिर उसकी नेचर को चेंज कर दिया जाएगा उसके पनिशमेंट की. नाउ रिप्राइव का मतलब है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन. इफ एनी पर्सन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, देन व्हाट विल हैपन, the stay, there will be stay on the execution, either that will be taken for commutation. उसके बाद या तो उसको commutation की फॉर्म में पनिशमेंट मिलेगा, either he will get pardon. ठीक है, either he will get pardon or he will get commutation. So these are the what, these are the 5 pardoning powers. 5 फॉर्म्स है जिनमें आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट है अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स. डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब है कि इफ देयर इज एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट that is approved by the parliament are negotiated and concluded in his name. अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट हो रहा है जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, वो प्रेसिडेंट के नेम में नेगोशिएट या फिर कंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट इट स्टेट्स he is representative of India in international forums and affairs. International forums or affairs में president will act as representative of India. Next comes the military power. Military power का मतलब क्या है? See, president हमारी कंट्री में जो है ना वो चीफ कमांडर होते हैं सारे डिफेंस फोर्सेस. He is the chief of army, chief of navy and he appoints the chief of army, chief of navy and chief of air force. ठीक है, he is the chief commander of defense forces. वो कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के और वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी को, चीफ ऑफ नेवी को और चीफ ऑफ एयर फोर्स को. नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी पावर्स. इमरजेंसी पावर्स में ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैं जिनके साथ प्रेसिडेंट डील करते हैं. वन इज द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है. सेकंड इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं, ये 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट में वेस्ट करती हैं. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 and 365, and financial emergency under article 360. So these are the 3 types of emergencies that he deals with. This is all for our today's class. Tomorrow we will start with I'll start with explaining all these emergencies and we will discuss the veto power. Okay, so that's all for today's class. Have a good day ahead and thank you for today's discussion. I'll see you guys tomorrow at the same time 10 a.m. If you have any doubt with respect to today's class, please let me know.